students, welcome to our Maths Fun World. As in the previous video, we had learned about the recognizing notes and coins of Indian currency. Today, we will learn the combination of coins and notes. इसकी हेल्प से हम कई वैल्यू के coins को ऐड करके उसकी टोटल वैल्यू निकाल सकते हैं. एग्जाम्पल, अंकल अली एंड आंट आमना असलम एंड सायरा के घर ईद पर जाते हैं. They give 50 rupees to Aslam and 10 rupees to Saira. Can you tell me उन लोगों के पास टोटल कितने रुपीस हुए? रुपीस 50 प्लस रुपीस 10 is equal to रुपीस 60. Take out total 60 rupees. So what did we do here? यहाँ हमने नोट्स की वैल्यू को ऐड किया और उसका टोटल ऐड करके राइट किया, है ना? Let's take one more example. Sia and John are visiting a home for old people. उन्होंने old people के लिए कुछ गिफ्ट्स खरीदे जिसमें उनको कुछ नोट्स एंड कॉइन्स को स्पेंड करना पड़ा. Let's see उन्होंने कौन सी थिंग्स खरीदी और उनकी वैल्यू क्या है. They bought pen. पेन के लिए उन्होंने 10 रुपीज का नोट एंड 5 रुपीज का एक कॉइन दिया. So what is the cost of pen? We will add rupees 10 plus rupees 5 is equal to rupees 15. So the cost of pen is rupees 15. आप both ways में राइट कर सकते हैं. रुपीज का सिंबल ड्रॉ करके और उसके बाद कॉस्ट राइट की, या फिर RS डॉट और उसके बाद उसका कॉस्ट राइट कर सकते हैं. They also bought flower pot. फ्लावर पॉट के लिए उन्होंने 20 रुपीज का एक नोट दिया एंड 10 रुपीज का एक और नोट दिया. What is the cost of flower pot? We will add rupees 20 plus rupees 10. So we get rupees 10 plus rupees 20 is equal to rupees 30. और हम इसे another way में ऐड कर सकते हैं. RS dot 30. Let's take one more example. Maya and Mahesh have collected money for the poor children in their piggy bank. Let's see उन्होंने अपने अपने piggy bank में कितने रुपीस कलेक्ट किए. In Maya's bank there were 2 coins of 1 rupee, 3 coins of 2 rupees and 1 coin of 5 rupees. Now we will add all these coins. 1 plus 1 is equal to 2. 2 plus 2 plus 2 is equal to 6 plus 5. So we get 2 plus 6 is equal to 8 and 8 plus 5 is equal to 13. So there were 13 rupees in Maya's box. In Mahesh's bank or box, there were 2 coins of 5 rupees and 3 coins of 10 rupees. We will add 5 plus 5 is equal to 10. 10 plus 10 plus 10 is equal to 30. So 10 plus 30 is equal to 40. It means there were 40 rupees in Mahesh's box. Another example. Irfan goes to a stationery shop. He wants to buy a scale and pencil. The cost of scale is rupees 10 and the cost of pencil is rupees 3. Can you tell me अगर केवल उसे coins देने हो तो वो कितने रुपीस के coins देगा और वो भी कितने? Let's see. He can give rupees 5 plus rupees 5 plus rupees 2 plus rupee 1 means 5 के 2 coins, 2 rupees का 1 coin and 1 rupee का 1 coin. या फिर 10 rupees का 1 coin, 2 rupees का 1 coin and 1 rupee का 1 coin. या फिर अपने अकॉर्डिंग कॉइन को कंबाइन करके देगा ताकि टोटल 13 रुपीस हो जाए. अब हम इन कॉइन्स को ऐड करके देखते हैं. 10 plus 2 plus 1. So we get 10 plus 2 is equal to 12 and 12 plus 1 is equal to 13. So there are 13 rupees. Last example is
आरुष अपनी मम्मा से पूछता है, मम्मा मेरे पास टोटल 2 कॉइन्स 5 रुपीज के हैं, 1 कॉइन 2 रुपीज का है और 1 कॉइन 1 रुपीज। ये टोटल कितने रुपीज होंगे? His mother explains, जब भी हमें टोटल मनी काउंट करना होता है तो सिंपली हम उन कॉइन्स या फिर नोट्स पर लिखे हुए नंबर्स को ऐड कर देते हैं तो हमें टोटल अमाउंट पता चल जाता है। Firstly, add 2 coins of 5 rupees, which will be rupees 5 plus rupees 5. So we get 5 plus 5 is equal to rupees 10. Then add 1 coin of 2 rupees plus 1 coin of 1 rupee. So we get rupees 2 plus rupees 1 is equal to rupees 3. Now add 10 rupees plus 3 rupees. We get 10 plus 3 is equal to 13 rupees. So you have 13 rupees. Arush, he says, Mama, I want to buy a packet of pencils which is of 15 rupees. मेरे पास तो एक भी 15 rupees का ना तो कॉइन है और ना ही नोट है। His mother explains, Arush, हम 13 rupees में अगर 2 rupees और ऐड कर दें तो टोटल हमारे पास 15 rupees हो जाएंगे। As you can see on the screen also, 13 rupees में हमने 2 rupees का कॉइन और ऐड कर दिया। I hope kids, now you may have understood the concept of combination of coins and notes. Now it's a practice time. The question is, complete the page number 127 and 128 in your book. So that's it for today kids. Till then, keep on smiling and also make others smile.